फर्स्ट थिंग मैंने एनालाइज किया कि क्या उसके पीछे रीजंस क्या है कि मुझे ट्रबल कर रहे हैं। तो रीजंस वेर वेरी जेनरिक which most of the people will have. Lack of proper planning, somewhat ambitious planning, without much preparation. That was one reason. मैंने गलतियां काफी की थी, कोई गाइड करने के लिए था नहीं मुझको। तो अकाउंटेबिलिटी के लिए ये भी मालूम होना चाहिए कि व्हाट इज राइट, देन वी कैन थिंक अबाउट अकाउंटेबिलिटी। अगर हमको पता ही नहीं है कि क्या प्लान कैसा होना चाहिए, तो अकाउंटेबिलिटी शायद हम गलत पैरामीटर पे डिस्कस करें या फिर थिंक करें उसको। So as I was saying कि आज का जो सेशन है वो एक कोई नॉर्मल सेशन नहीं होना. We will be talking about dreams, the dream of becoming an IAS in future. घर का पहला IAS या फिर घर की पहली IAS. क्योंकि देखो जो भी इस एग्जाम के लिए प्रिपेयर करता है उस स्टूडेंट के लिए कहीं ना कहीं एक जॉब नहीं होता या फिर कोई एक टाइटल नहीं होता. इट इज अ होप और अ प्राइड और अ प्रॉमिस टू चेंज एवरीथिंग, या फिर एक फैमिली का पूरा सिचुएशन चेंज करने का भी किसी किसी का ये मोटिव होता है. बट द प्रॉब्लम है ये जर्नी इतनी इजी नहीं है. दिस इज अ वेरी डिफिकल्ट जर्नी. बहुत सारे ऑब्स्टेकल्स आते हैं. कभी कभी यू विल फील कि आप बहुत ज्यादा प्रेशर्ड हो इस जर्नी की वजह से. कभी कभी यू विल फील यू आर वेरी लॉस्ट, would be also confused about the journey. So to clear all the doubts, we have our topper Soham IPS. He will be guiding you guys today. सोहम सर की भी स्टोरी कहीं ना कहीं ऐसी ही है. ही ऑल्सो बिलोंग्स फ्रॉम अ विलेज फ्रॉम महाराष्ट्र, जहाँ पर उनके फैमिली बैकग्राउंड एक फार्मिंग कल्चर से था. वो फार्मर के बेटे हैं. कहीं ना कहीं उन्होंने भी ये सारे बैरियर्स देखे थे, जहाँ पे रूरल बैकग्राउंड होना, लैंग्वेज बैरियर होना, या कभी कभी एंजाइटी अटैक्स भी आना. ही हैज गॉन थ्रू ऑल. सो ही विल बी गाइडिंग यू टुडे एंड ही विल बी लेटिंग यू नो कि इन सबको ओवरकम कैसे करें. एंड टू बी ऑनेस्ट, so today's agenda is basically जहाँ पे we'll discuss first of all कि scratch या फिर level 0 से कैसे prepare करें 2024 के लिए. Secondly, we'll discuss कि next 10 month का एक blueprint कैसा रहना चाहिए. सोहम सर आपको बताएंगे. And thirdly, सोहम सर as your mentor. सोहम सर को हमारे co-founder सजल सर ने गाइड किया था. उन्होंने 2 अटेम्प्ट फेल करे थे. उसके बाद 3rd अटेम्प्ट में अंडर द गाइडेंस ऑफ सजल सर ही बिकेम द IPS. एंड अब वो हमारे सुपर मेंटोर भी है. सो like without further ado, let's all welcome our IPS Soham Mandhare sir. Sir, thank you so much first of all with for connecting with us and being a guide to a student, because it means a lot to them. Yes. थैंक यू मुस्कान एंड प्रवीण सर. इट इज ये बहुत एक अच्छी अपॉर्चुनिटी टू रिफ्लेक्ट अपॉन माय जर्नी. जो भी मैंने फेस किया था, इश्यूज थे. आई थिंक मोस्ट ऑफ द पीपल फेसेस दोज इश्यूज, बट क्या होता है कि बहुत कम है जो उसके ऊपर बात करते हैं आफ्टर सिलेक्शन. एंड उससे जो भी हम डिस्कस करेंगे, शायद जो भी आज ज्वाइन हुए हैं तो उनको एक अच्छा डायरेक्शन मिलेगा, करना क्या है, कैसे करना. तो लुकिंग फॉरवर्ड टू इट. Thank you so much, sir. I also want to welcome Praveen sir, who is our mentor head, जो कि काफी सारे स्टूडेंट्स को गाइड करते आए हैं एंड वो आगे करेंगे भी. तो सर आप क्या कहना चाहेंगे? Thank you so much, Muskan. Thanks, Soham, for the kind words. बिल्कुल देखो, ये बड़ा इंपॉर्टेंट टाइम है. 10 महीने काफी होते हैं इस एग्जाम को निकालने के लिए. दोज हु आर वांटिंग कि इस ही अटेम्प्ट में उनका निकले 24. तो 10 month 10 hours is the strategy for those who are full time preparing. Okay, and with mentor, वही मैं कहूँगा. आई एम वेरी हैप्पी टू से दिस कि मेरी टीम काफी लगी हुई है दिन रात बच्चों को गाइड करने में. उसी का फल है कि सोहम जैसे कई ऑफिसर्स हमारे स्टूडेंट्स हैं. वी आर फॉर्चुनेट टू हैव सच ग्रेट स्टूडेंट्स लाइक सोहम एंड अदर्स, इंक्लूडिंग आदित्य पांडे, पवन दत्ता, ऑल दोज रैंकर्स हु आर इन द होली लिस्ट ऑफ यूपीएससी. तो आपको भी बनना है, एंड ये कैसे स्टार्ट करेंगे वही प्रोसेस आज हम समझाएंगे. थैंक यू मुस्कान फॉर द प्लेटफॉर्म. थैंक यू. सो यहाँ पे I'll have a pen and a paper, because this session is going to be very insightful for you guys and you will know like कि UPSC कैसे crack करना चाहिए. So I'll give you like 30 seconds to grab a pen and a paper so that you can write it out whatever Soham sir will say today.
तो सर सो हमसे फर्स्ट क्वेश्चन मेरा ये है कि आपने तो चलो क्रैक कर लिया एग्जाम, बट वट एवर द इनसाइट्स दैट यू हैव अबाउट दिस एग्जाम अभी तक, उसके अकॉर्डिंगली अगर आपको 2024 के लिए प्रिपेयर करना है लाइक 0 लेवल से, तो आप क्या करोगे? फर्स्ट थिंग मैं तो शुरुआत करूंगा बेसिक से, जो भी फाउंडेशंस लगती है एग्जाम के लिए। मुझे सिलेबस याद होना चाहिए, मुझे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का आइडिया होना चाहिए कि क्या पूछा जा रहा है क्वेश्चंस में, डिमांड ऑफ द क्वेश्चन। अगर एक बार हम ये याद कर ले तो उसके बाद प्रॉपर प्लान बनाना है कि कब तक ऑप्शनल करना है, उसके बाद प्रीलिम्स की डेडिकेटेड तैयारी कब चालू करनी है, मेंस का स्टैटिक पार्ट कब तक करना है। तो प्लानिंग शैल बी रियलिस्टिक। क्या होता है कि हम प्लान करते हैं, एग्रेसिव प्लानिंग होती है, फिर वो बैकफायर करती है। प्लानिंग मस्ट बी रियलिस्टिक, और प्लानिंग में कंटिन्यूस इंप्रूवमेंट होना चाहिए। प्लानिंग में मैं रखता बफर जोन्स। सपोज आई एम स्टडिंग फॉर 10 hours a day, then at least 1 hour I will not plan anything for that. I will only plan for 9 hours. So whatever targets that are missed in those 9 hours, I will try to complete that in last hour. Same goes for other plans also, such as weekly plan, monthly plan. So planning is very much important. This shall be first priority. The second will be selecting the proper book list and referring those, selecting the proper newspaper, proper magazine. So resources come second. Then third is the practicing what the UPSC is going to test you. That means mock test, practicing to analyze your performance, your level of preparation. So this will be the my crude plan that I will focus upon. Primary things. This will be the primary things. Okay, sir. So, sir, how would you know that ki if you have started from scratch, basically, right? So, how would you get that accountability कि okay, I am at the right point of my journey अभी, कि अगर मैंने NCERT cover कर लिया, इतने में हो जाना चाहिए, like वो एक accountability कैसे build होती है कि you know this 10 months is crucial time for students, तो वो 10 महीने में हर point पे पता होना चाहिए ना कि यहाँ तक ये हो जाना चाहिए। तो how would you know like situational कैसे पता चलेगा? Accountability हमको एक दूसरे एरिया में ले जाती है कि योर प्रॉपर स्टडिंग, वेदर यू आर स्टडिंग प्रॉपरली और नॉट। आप अगर अच्छे से पढ़ाई कर रहे हो तो आपको आउटपुट मिलता है, तो दैट ब्रिंग्स अकाउंटेबिलिटी ऑटोमेटिकली। डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑफ ऑटोमेटिकली अकाउंटेबिलिटी आर लाइक अवॉइडिंग डिस्ट्रैक्शंस, डेविएशंस, देन डूइंग व्हाटएवर यू आर डूइंग इन प्रॉपर मैनर, so that it will help you to crack the examination. हम यहाँ पे कोई PhD, कोई नॉलेज गेन करने के लिए आए नहीं है. We are here to crack the examination. That examination demands you to have some basic knowledge, some abilities. That ability include ability to plan, ability to manage everything. Because this examination, इसमें क्या है कि it is everything about management. Whether you are able to manage your UPSC preparation. आपको उसमें मैनेज ये भी करना है कि आपके फैमिली रिलेशन अच्छे हो, आप सोसाइटी से डिस्कनेक्ट ना हो जाओ टोटली, आप अपनी हेल्थ इग्नोर ना करो टोटली। ऑल दिस एस्पेक्ट कम इनटू अकाउंटेबिलिटी। यू हैव टू गिव प्रॉपर टाइम। आपको प्रॉपर टाइम सभी एस्पेक्ट को देना है, तभी आप बोल पाओगे कि यू आर अकाउंटेबल टू योरसेल्फ। ज्यादा रैश नहीं होना है खुद के ऊपर। बी एम्पैथेटिक टू योरसेल्फ आल्सो, दिस इज आल्सो इम्पोर्टेंट। एंड अगर हम अच्छे से करें तो ये समय काफी है टू गेट अ रैंक। मैंने गलतियां काफी की थी, कोई गाइड करने के लिए था नहीं मुझको, तो अकाउंटेबिलिटी के लिए ये भी मालूम होना चाहिए कि व्हाट इज राइट, देन वी कैन थिंक अबाउट अकाउंटेबिलिटी। अगर हमको पता ही नहीं है कि क्या प्लान कैसे होना चाहिए, तो अकाउंटेबिलिटी शायद हम गलत पैरामीटर पे डिस्कस करें या फिर थिंक करें उसके ऊपर। सो ये चीजें इंपॉर्टेंट है अकाउंटेबिलिटी के लिए। Okay, sir. Praveen, sir, like what would you say कि you guide students also regarding this, UPSC journey? So आप उनकी accountability कैसे set करते हो? राइट, सी क्या होता है ना, इस यूपीएससी जर्नी में पिछले 7.5 ईयर्स से मैं मेंटोरशिप प्लस टीचिंग कर रहा हूँ। एंड अब हमारे अंडर काफी अच्छी टीम है जो मिनिमम 2 सिविल सर्विस इंटरव्यू अपीयर्ड है, तो मैं इनके ऊपर इतना भरोसा कर सकता हूँ कि वो बड़े अच्छे से गाइड कर रहे हैं। तो बस आपको भी एक स्टेप आगे आना होगा स्टूडेंट को।
अकाउंटेबिलिटी सेट करने के लिए चाहिए कि 11th आवर पे जो हम चीजें करते हैं वो ना करें। उससे क्या होता है कि नॉन कंसल्टेशन ऑफ कोर, ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम है बच्चों का, कि बच्चे यूपीएससी को एक ऐसी हवा बना के रखे हैं कि अंडर द स्काई कुछ भी आ सकता है, भाई व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी या यूट्यूब पे देख के उनको लगता है कि कुछ अलग है। ऐसा नहीं है। जैसे सोहम ने बहुत सही कहा कि यहाँ पे ज्ञान नहीं चाहिए, या फिर वहाँ ज्ञान ये एकदम बेस है, यहाँ पे टेक्निक की बड़ी जरूरत है। ओवर द पीरियड ऑफ टाइम जो मैंने जाना कि हो सकता है, विद ड्यू रिस्पेक्ट टू सोहम एंड अदर रैंकर्स इंक्लूडिंग आदित्य, से भी बहुत ज्यादा होशियार और बहुत टैलेंटेड लोग हैं, बट उनका नहीं हो रहा है। राइट? क्यों नहीं हो रहा? क्योंकि राइट टाइम पे राइट डिसीजन क्या करना है, कहाँ से करना है, और 7 मिनट में आंसर कैसे लिखना है, ये स्ट्रेटेजी जाननी है। यही आपको मेंटर को एक्सप्लॉइट करके लेना है। ठीक है? तो सजल सर हमारे एक बात बड़ी अच्छी कहते हैं कि प्रवीण 7 मिनट में लाइक गंदे आंसर तो सब लिखेंगे 10 मार्क के लिए, लेकिन जो कम गंदा लिखेगा वो आईएएस बनेगा। तो मेरा वही रहता है कि यार आप कम गंदा लिखो। राइट? तो बस हम ऐसे कराते हैं कि वीकली कॉल बच्चों को देके हम उनकी अकाउंटेबिलिटी सेट करते हैं, उनकी क्वेरी रिजॉल्व करते हैं और पेपर डिस्कशन लेते हैं। Okay, sir. Thank you. Soham sir, my next question is basically, as you know, 2023 wala jo prelims type was like a googly ball actual mein. Students were so confused about the new trend and everything. So, like, put some light over that, ki how to tackle that unexpected thing in the prelims or either in the mains also. Ki how to be in that mindset कि हम लोग ultimately वो अपने आप को सीट में देख पाए, एक IAS दिख जाए आगे या फिर एक IPS दिख जाए। तो तो पेपर में बहुत सारी चीजें अनएक्सपेक्टेड थी, लेकिन बहुत सारी ऐसी चीजें भी थी जो एक्सपेक्टेड थी, जो कि थी फ्रॉम बेसिक सोर्सेस which is polity, then economy, some basics about that. So even though UPSC क्या कर रहा है कि अनएक्सपेक्टेड रैंडम कहाँ से भी कुछ क्वेश्चन बना रहा है, लेकिन एक सेक्शन ऐसा होता है पेपर में जो यू कैन प्रेडिक्ट दैट इट विल कम फ्रॉम हियर। सो उस प्रेडिक्ट उसको अंडरस्टैंड करके अपना पर्सपेक्टिव सेट करके अगर आप बेसिक पे फोकस करोगे, अपना फाउंडेशन बेस पक्का करोगे, तो द रैंडमनेस अनएक्सपेक्टेडनेस विल नॉट बॉदर यू। आई क्लियर्ड 5 prelims and all those 5 prelims I felt that randomness in every paper. Still I was able to get past the cutoff line. फॉर एग्जाम्पल क्या होता है यूपीएससी प्रीलिम्स पेपर में हर साल किसी न किसी डेट की इम्पोर्टेंस पूछी जाती है। इस साल उन्होंने अगस्त 7 या अगस्त 8 के लिए पूछा था, नेशनल हैंडलूम डे। रिसेंटली अगेन इट वाज सेलिब्रेटेड। उसके पहले उन्होंने पूछा था इंटरनेशनल लैंग्वेज डे। तो एक थीम है, डे डे के ऊपर कुछ ना कुछ पूछेंगे। दूसरी थीम क्या है उसमें कि एनिमल कैरेक्टरिस्टिक्स पूछेंगे। इस साल उन्होंने वैगन डांस पूछ लिया। उसके पहले उन्होंने पेंगोलिन का वो वॉकिंग स्ट्रक्चर है, फिर इफ ही अटैक्ड देन हाउ ही रिस्पॉन्ड्स, वो कैरेक्टरिस्टिक पूछ लिया। वैसे थीम से हर साल वो थीम पे पूछती है यूपीएससी, एंड वो थीम कहाँ से भी नहीं आता। अभी इंटरनेशनल लैंग्वेज डे या फिर नेशनल हैंडलूम डे, इट वाज इन न्यूज। वैगन डांस, इट वाज कवर्ड इन इंडियन एक्सप्रेस एंड द हिंदू बोथ. So it was in current affairs. We will think that it was random something, but it was in news. It was in newspaper. So it is basic that you have to follow basics. You will feel randomness still. आपको फिर भी randomness कुछ लगेगा, लेकिन अगर आप बेसिक्स कर पाओगे तो आपके चांसेस बढ़ जाएंगे प्रीलिम्स क्लियर करने के। Okay, sir. So, sir, like आप basics पे बार-बार, like you're emphasizing over the basics part. So, what you would suggest कि basics में सबसे पहले you should complete these things. There are certain things which are very entertaining and you will enjoy reading, such as geography, polity, then economic, basic definition, basic concepts, then ancient culture. If you're not enjoying your ancient medieval art and culture, then you will face difficulties. It is very entertaining. So these are some basics. In environment, in science and technology, it will be random, but these are some basic stuff. So if you able to do 80-90% right in basics, that is given in NCRTs or reference book that everyone is referring. I'm not calling for 100% correctness there. Even if you are able to do 80-90%, then your chances goes beyond 80% to clear the prelims. Okay, sir.
So much like you have been last 1.5 years now, actually almost 2 years, right? So how you are going to guide these students now in future for the 2024 or the 2025 attempt? So basically, कुछ ऐसी चीजें हैं जो यूपीएससी में होती है लेकिन हम उसका ज्यादा स्ट्रेस लेते हैं, जैसे कि सिलेबस कंप्लीट करना. वी रन आफ्टर फिनिशिंग द बुक्स वन आफ्टर अनदर, और इन दैट इंडिवर वी जनरली क्या होता है, हम भूल जाते हैं कि हमने क्या पढ़ा है पीछे. अगर आप भूल गए तो आप एग्जाम में उसको यूटिलाइज नहीं कर पाओगे. तो ये क्या करता है, स्ट्रेस एंजाइटी दे जाता है जो भी पढ़ रहा है उनको, क्योंकि वाट एवर यू टाइम हियर डिवोटेड, अगर उसको आपको बेनिफिट नहीं हो रहा तो आपको लगता है कि टाइम वेस्ट गया और आपके चांसेस कम हो गए. तो फर्स्ट थिंग्स आई स्टार्ट विथ द अंडरस्टैंडिंग दैट यूपीएससी सिलेबस विल नेवर एंड. सो प्राइमरी आपका जो कंपटीशन, आपका जो रेस होना चाहिए वो सिलेबस खत्म करने के लिए नहीं, लेकिन कंसेप्ट्स जो अच्छे से अंडरस्टैंड कर पाओ उसके लिए होना चाहिए. आपका प्राइमरी फोकस उसके ऊपर होना चाहिए. उसके लिए आपको एक प्रॉपर प्लान करना चाहिए. अगर हम 24 की बात करें, 24 के लिए अगर कोई अब पढ़ रहा है तो आपको दिसंबर तक ऑप्शनल के लिए टाइम देना चाहिए. अच्छा, लेट अस से 40% मिनिमम ऑफ योर टाइम वट एवर यू आर स्टडिंग. 10 घंटे पढ़ रहे हो तो 3-4 घंटे आप ऑप्शनल के लिए देना चाहिए. अगेन टू मेक योर कंसेप्ट स्ट्रॉन्ग. ऑप्शनल आप खत्म करने के पीछे मत जाओ. अगर आपका प्रीलिम्स ना निकले तो आप ऑप्शनल लिख ही नहीं पाओगे. तो ऑप्शनल का एक बेसिक एंजॉय करो, ऑप्शनल उसका नॉलेज एंजॉय करो, बेसिक कंसेप्ट्स क्लियर करो. उसके बाद रिमेनिंग टाइम जो भी आपके पास 60% तो 40-20% आप जीएस एंड करंट अफेयर्स के लिए देना चाहिए. करंट अफेयर्स इज वन ऑफ द इम्पोर्टेंट एरिया विच विल हेल्प यू इन ऑल द 3 स्टेजेस. तो प्लानिंग के बारे में हम डिस्कस कर रहे थे. दिसंबर तक आप ऑप्शनल के लिए अच्छा समय दीजिए. उसके बाद यू कैन ओनली फोकस ऑन जीएस बिकॉज क्लियरिंग द प्रीलिम्स इज मोस्ट इम्पोर्टेंट. If you don't clear the prelims, then you again have a lot of time to prepare for optional or anything that's up. So this shall be a crude plan till December optional. After December आपको GS के ऊपर फोकस करना है. Till December whatever you are doing, you must solving the prelim mock test. If this is your first attempt, you haven't solved any test mock test, then you shall subscribe to any mock test and write all the test. Do not bother about score. I have seen, मैंने बहुत सारे ऐसे एस्पिरेंट देखे जिनको स्कोर कम आता था लेकिन वो पॉजिटिव रहे हमेशा. They didn't bother about the score. स्कोर दे पॉजिटिव रहे. उसके बाद उन्होंने अच्छा स्कोर लाके प्रीलिम क्लियर करके मेंस लिख के रैंक आई नहीं थी उनकी लेकिन प्रीलिम्स क्लियर किया था उन्होंने. तो ऐसा मॉक टेस्ट है. उसके बाद जो बेसिक्स रिसोर्सेस है उनकी बार बार रिवीजन करनी है आपको. माइक्रो नोट्स बनाने हैं उनके. और प्रीलिम के 1 महीना पहले आपको कोई टेस्ट देना नहीं है. आप at the max you can solve 4 or 5 questions a day to keep in touch with the question solving procedure. तो उस 1 महीने में आपको बेसिक अच्छे से एक बार पढ़ लेना है, क्योंकि माइक्रो नोट्स पढ़ते पढ़ते हम बेसिक गलत कराते हैं और बेसिक गलत हो जाए तो प्रीलिम्स पास करने का कोई मतलब रहता नहीं है. तब तक अगर आपके पास समय है तो यू कैन ऑल्सो ज्वाइन टेस्ट सीरीज फॉर मेंस. यू कैन राइट सम टेस्ट. अगेन डू नॉट बॉदर अबाउट दैट. क्या शुरुआती दिनों में क्या होगा कि आपके टेस्ट कंप्लीट होंगे नहीं. यू विल हार्डली एबल टू सॉल्व टू से 10-15 क्वेश्चंस आउट ऑफ 20. यू विल गेट हार्डली 50-60 मार्क्स. मुझे भी आए थे इतने मार्क्स. ग्रेजुअली उसके 1-2 बार रिविजन होने के बाद वो बढ़ते हैं. Do not bother about it. Just write for the sake of practicing it, how to write the answers. It will make you ready to some extent to write mains if you clear the prelims. उसके बाद prelims के बाद एक different planning होता है. You have to give proper time to everything, writing, essay writing, and all that stuff. So before prelims, what you can do, you can cover the basics. Basics in the sense of ethics. Basic means some GS which will not help in prelims, but it will help in mains. Before December, you can finish with ethics. You can finish with some static points such as internal security, then cyber security to say, if they are more relevant to mains, you can prepare some basics about that.
So this shall be your crude plan. You have to refine your plan again and again by analyzing where you stand. आप कहाँ पे हो, आपका क्या छूटा है. Be flexible for that. That shall be a proper strategy. Then for 25, it is altogether different game. You can currently focus all your time on optional. Then 10-12 months before, if you are able to finish with your optional, then can simply shift to general studies and current affairs. So this shall be a crude plan, I think. Okay, sir. Thank you. That was very insightful. Sir, Praveen sir, अगर किसी स्टूडेंट को सोहम सर के अंडर मेंटोरशिप लेनी है या फिर दे वांट अ टॉपर, सबको होता है कि सबके पास एक आईएएस भैया आईएएस दीदी नहीं होती, तो उनके लिए क्या ऑप्शन होता है? राइट, देखो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि क्या होता है ना, जिस साइकिल में सोहम थे या ऑफिसर थे, उस साइकिल में अभी हमारे स्टूडेंट है, ठीक है। अभी जैसे यहाँ पे 90+ स्टूडेंट जो देख रहे हैं वो भी इसी साइकिल में है कहीं ना कहीं, तो यहाँ से कोई एग्जिट वे नहीं है ना, कोई एग्जिट गेट नहीं है, क्योंकि होता क्या है, बच्चे उसी में लगे रहते हैं। एंड आई विल टेल एवरीवन, सबसे एज अ मेंटर सबसे टफ जॉब क्या है पता है? सबसे टफ जॉब है, क्योंकि यहाँ पे आप सब बच्चे कुछ ना कुछ सीख के आए हो, एंड वो बड़ा पेनफुल है उसको अनलर्न करवाना। हम सबसे पहले उसको अनलर्न करवाते हैं, क्योंकि आप वो सीख के आए हो तभी जाके तो नहीं हो रहा है, मल्टीपल मेंस लिख के भी नहीं हो रहा है। मेरे पास स्टेट पीसीएस वाले भी बच्चे आते हैं, इवन हमारे यूपीएससी में भी रैंकर्स है, बट कुछ ना कुछ तो गलत हो रहा है, इंक्लूडिंग की मल्टीपल मेंस दिए हुए हैं। तो अनलर्निंग हम करते हैं सबसे पहले। और अगर किसी को सोहम के अंडर करना है तो बिल्कुल हमने सोहम की बैच लॉन्च करी है, तो सोहम विल बी एक्टिंग एज अ सुपर मेंटोर देयर, एंड ही विल टेक वीकली सेशंस, जैसे अभी हो रहा है ना, ऐसे प्रॉपर एक शेड्यूल के अनुसार हम वीकली सेशंस करवाते हैं, सोहम के भी करवाएंगे, एंड मंथली आप एक बार उनसे 1-on-1 फोन कॉल कर सकते हैं। तो अदर देन योर पर्सनल मेंटोर एंड मेंटोर हेड लाइक विच इज मी, हम दोनों के अलावा थर्ड लेयर होगा, एंड सेकंड लेयर में हमारे फाउंडर सजल सर भी होंगे, जिनके अंडर आप लाइक गाइडेंस ले सकते हैं आफ्टर वंस यू क्वालिफाइड द प्रीलिम्स, है ना। तो यस, यू कैन एब्सोल्युटली गेट द बेनिफिट ऑफ सुपर मेंटर, बिकॉज ये कॉन्सेप्ट ही बड़ी काम की है। क्योंकि जो मैंने पूछा पहला सवाल कि लास्ट ईयर सोहम आप क्या कर रहे थे, तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि उन्हीं के लैंग्वेज में जानना, क्योंकि एग्जाम की अभी डिमांड क्या है वो सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट है। एग्जाम आपने 2010 में निकाला कोई फायदा नहीं, 2020, 21, 22 में निकाला तो बताओ, ऐसी बात होती है। Yes, sir. So, as Praveen sir has mentioned, we are going to launch a new batch under Soham sir mentorship. So, whoever wants to join that mentorship program, to share a registration link in the chat box. Abhi, you can register yourself with 200 rupees. It's going to be refundable. हमारी तरफ से आपको हमारे जो IAS mentors हैं उनमें से किसी का कॉल आएगा, they'll help you out with it. And also you can connect with Soham sir, have a proper guidance, have a proper approach with him also. So ये super mentorship batch we will be starting from 21st of August, क्योंकि अब देर करने का वक्त नहीं है, ना ही कोई बहानेबाजी मारने का है। अभी नहीं तो कभी नहीं वाली सिचुएशन आ चुकी है, right? So whoever wants to join the Soham sir mentorship, we are going to share the form अभी यहाँ पे, so you can register yourself. Otherwise, you can also drop your number if you have any other queries apart from that. Okay. And Soham sir, like what you would suggest student abhi, because the thing is you have gone through that like portions जहाँ पे depression हो जाता है students को, थोड़ा anxiety होता है, तो how you have overcome that? फर्स्ट थिंग मैंने एनालाइज किया कि क्या उसके पीछे रीजंस क्या है कि मुझे ट्रबल कर रहे हैं। तो रीजंस वेर वेरी जेनरिक which most of the people will have. Lack of proper planning, somewhat ambitious planning, without much preparation. That was one reason. Second reason was ignorance toward health, lack of physical exercises or meditation, breathing practices, pranayama, yogasana. So I worked on that. I properly planned things. Sajal sir was my mentor in Civilsdaily. He helped me to increase my score in general studies from 364 in first attempt to 416. It was very huge boost. So मैं उनसे डिस्कस करता था कि कैसा प्लान होना चाहिए, कैसे
करना चाहिए। तो प्रॉपर प्लानिंग मेरी हुई वहां से आगे। प्रॉपर प्लानिंग के बाद मैंने प्रॉपर टाइम दिया मेडिटेशन के लिए, 15-20 मिनट्स, ब्रीथिंग प्रैक्टिस अगेन 15-20 मिनट्स. Then there are some techniques which I use to remember the content. Content retention is the most important thing. If you are not able to retain the content, आपको एग्जाम में उसका यूज होगा नहीं. तो कंटेंट रिटेंशन के कुछ टेक्निक्स है जो फॉलो करने के बाद आप जो भी पढ़ रहे हो तो उसको लंबे समय तक याद रख पाते हो. टेक्निक्स का मैंने यूज किया तो एक बार प्रॉपर प्लानिंग के साथ एक बार सिलेबस एक कवर हो गया 80-90%. If something get covered or you feel that you are in control now, then stress anxiety automatically come hota hai with the aid of other steps also, such as meditation. So all these factors were there which I worked upon: content retention, then proper scheduling, then I was realistic after that. So being realistic is very much important. So all these things helped me a lot to come over this. Okay, sir. Thank you so much. Sir, I think now we should open the floor for the questions क्योंकि students को बहुत सारे questions है अभी. यहाँ पे कुछ students already लिख चुके हैं. So will you be addressing them now? Definitely. Please ask one by one. Or if someone having question, they can unmute themselves or raise hand and unmute yourself and ask. Sir, my question is, sir, how to maintain consistency, sir? Consistency, again, that brings us to what proper planning. जो मैंने बोला था, आपके पास बफर पीरियड होना चाहिए. अगर आप क्या होता है, अगर आपका प्लान फॉलो ना हो तो एक डिमोटिवेशन आ जाता है, फिर इंटरेस्ट रहता नहीं आगे फिनिश करने के लिए. तो एक प्रॉपर प्लान होना चाहिए, उसमें बफर आवर्स होने चाहिए, रिवीजन आवर्स होने चाहिए. रिवीजन करने के बाद अगर आप जो फॉर एग्जांपल आपने आज कुछ पढ़ा और उसको अपने अच्छे से रिवाइज किया आज या कल सुबह, तो अगले दिन जो भी आप पढ़ोगे तो अगर वो इंटरलिंक्ड होगा पिछले दिन से, you will understand the concept better. So this understanding and which will help you to retain content and small targets, small improvements, all these things help in maintaining consistency. Thank you, sir. Any other questions, anybody? Nikhil, I guess he has a question. Please unmute yourself. Can you tell me about the reading comprehension? How to tackle that reading comprehension? It's going so much tough to me. In reading comprehension, while reading the paragraph, you have to underline important events happen in that particular paragraph, such as anything change, situation change, you have to underline there. Second, you have to visualize what is happening there on paper while reading. Third thing, you have to use what we say, identifying the most wrong option. If there are 4 options, read all, identify the most wrong, eliminate that, elimination technique we call it. If from the remaining 3 options, I read all 3, identify the most wrong, eliminate that. By elimination, you will get to most right answer among the 4, and your accuracy will be above 90%. I used to follow this. Okay, sir. Thank you. Now, I guess I'll ask Mitali to unmute herself so that she can ask her question. Good Yes, morning, yes. ma'am. Good morning, sir. Yeah. Good evening. Sorry, good evening, sir. Good evening, York. Good evening, sir. Good evening, ma'am. Yes. Before asking a question by you, before taking a question by you, basically, I would love to share something. देखो, consistency के बारे में शायद किसी ने कुछ सवाल पूछा था, तो I would like to share a screen. I don't know whether I will. हाँ, okay, I'll be able to. And I would like you to show something like how consistency can be maintained by us, of our thousands of students. So she's one of our students who took the admission in under mentorship program, Shubhangini Dubey. You can see 15th of March, week 3rd. Every week we produce a report. This is a report card, and then you can see my syllabus coverage and mock test attempt. What are the high points of my preparation of the week, and what are the identified pitfalls or traps that I need to avoid? ये हम every week
स्टूडेंट को सामने बिठा के ऑनलाइन वाया जूम और ऑफलाइन सामने हम ये फील करवाते हैं, एंड मेंटर इसको फील करके आपको और आपके गार्जियन जो आपके पेरेंट्स है इफ नेसेसरी उनको भी भेजते हैं। तो यहाँ पे ये है कि आपकी अकाउंटेबिलिटी हम रखते हैं। वीक 1 से वीक 12 अगर आप खुद को जज करेंगे, जो आई गेस आपने अभी तक उतना माइक्रो जज खुद को नहीं किया होगा, तो यू विल यूरसेल्फ वीक 1 में जो मेरे पिटफॉल्स थे वो सारे तो मेरी स्ट्रेंथ बन चुके हैं, एंड अकॉर्डिंगली यू विल गेट द मोटिवेशन कि हाँ अब मैं उसके लिए परिपूर्ण हूँ, मेरी 5 रिविजन्स हो चुके हैं, एंड इसी तरीके से एग्जाम निकलता है। सो दिस इज वन ऑफ द थिंग जो मैंने बताई, उसमें बाकी सारा प्रीलिम्स का भी है। इफ यू वांट टू जैसे सोहम ने बोला कि सर प्रीलिम्स के टेस्ट देने चाहिए, तो सिर्फ प्रीलिम के टेस्ट देने से, जो सोहम ने बड़ा सही कहा, बट उसको हम ट्रैक कैसे रखते हैं? देखो ये है हमारा एक्सेल, हर स्टूडेंट जो टेस्ट लिखता है उसका टोटल स्कोर, करेक्ट इनकरेक्ट, एंड इनकरेक्ट क्यों हुआ ये बड़ा जानना जरूरी है। तो मेंटर डिस्कस करते हैं कि अवेयरनेस गैप है, कॉन्सेप्चुअल गैप है, रिवीजन गैप है, या कोई और गैप है, बिकॉज देयर आर 26 गैप्स, फिर उस पर आपका काम किया जाता है। ठीक है, तो मेंटर इसीलिए फिर यहाँ पे आपको हेल्प करता है कि वो गैप पे काम हो, ना कि फिर जैसे जेनरिक बस चल रही है पढ़ाई वो ना हो, बड़ा स्ट्रेटेजिकली काम हो, राइट? थैंक यू गाइस। Yeah, Mitali, please ask your question. So actually my question is that कि we have so much to cover in a day, कि current affairs है, GS हो गया, optional हो गया, एंड यहाँ पे एक चीज जो रह जाती है वो होता है रिवीजन, कि हम लोग रिवीजन को टाइम नहीं दे पाते, क्योंकि रिवीजन को टाइम देते हैं ऐसा लगता है कि जीएस रह रहा है या बाकी चीजें रह रही हैं या वो कवर नहीं हो पा रहा, तो उसको कैसे अपने डेली शेड्यूल के अंदर इनकॉर्पोरेट करें? I will share what I used to do for that. मेरे पास सपोज 12 घंटे है, तो मैं 5 hours फॉर जीएस, 3 hours फॉर 4 hours फॉर ऑप्शनल एंड 3 hours फॉर करंट अफेयर्स दे दो। 12 hours का एक टेंटेटिव बोल रहा हूँ। प्लानिंग इज डिफरेंट थिंग एंड कंटेंट टारगेट आर डिफरेंट थिंग। फर्स्ट थिंग क्या है, हमारे पास दो वेज है टू अप्रोच द यूपीएससी प्रिपरेशन। फर्स्ट इज, आप कुछ टारगेट रखते हो कंटेंट, आई विल फिनिश 50 pages ऑफ स्पेक्ट्रम टुडे, और आई विल फिनिश 50 pages ऑफ एनसीईआरटी टुडे। एक टारगेट हो सकता है। दूसरा टारगेट क्या होता है, आई विल सिट फॉर 5 hours फॉर जीएस, whether it is from 8 to 1 or anything according to you. So for initial days आपको क्या करना है कि आप टाइम के टारगेट रखो, कंटेंट का ज्यादा मत रखो। कंटेंट आपको प्रेशराइज करेगा इनिशियली, टिल यू लर्न, टिल यू बिकम डिसिप्लिन्ड। आप अपने टाइम के टारगेट रखो, 5 hours फॉर जीएस, 3 hours फॉर ऑप्शनल एंड 3 hours फॉर करंट अफेयर्स। यू कैन डू चेंजेस, मॉडिफिकेशंस इन दैट। आप कह रहे हो कि रिवीजन के लिए समय मिलता नहीं था, तो सेम वाज आल्सो विथ मी। शुरुआती दिनों में ऐसा लगता है कि कंटेंट ही खत्म नहीं हो रहा तो रिवीजन करने से क्या होगा, लेकिन रिवीजन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। रिवीजन करने के बाद ही रैंक आती है, अगर आप रिवीजन नहीं करोगे तो रैंक नहीं आएगी आपकी। दिस इज 100% ट्रू। देन हाउ टू फाइंड वे फॉर रिवीजन? देन क्या किया मैंने कि सपोज मैंने प्लान किया था कि 8 से 12 मैं जीएस पढ़ूंगा, तो मैं 8 से 8 दिन क्या पढ़ा है तो उसको पढ़ता था सिर्फ 8 to 8:30। उसके बाद आगे का टाइम चारों चारों होता था 8:30 to 12। कंटेंट के टारगेट नहीं होते थे, बस आई यूज्ड टू बी ऑनेस्ट विथ मी। अगर मैं पढ़ना चाहता हूँ तो मैं सिर्फ पढ़ता था। जो भी डिस्ट्रैक्शंस होते हैं, फोन वगैरह, वो दूर रख दीजिए, कहीं पे फ्रेंड के पास दे दीजिए, फिर फैमिली के पास दे दीजिए, जो भी आपका बुक है उसी के पास उसको ही लेके पढ़ाई आगे करनी है। सेम गोज फॉर ऑप्शनल एंड करंट अफेयर्स। For giving 4 hours for optional, start with 30 minutes of revision what you have covered yesterday। आपने पिछले दिन क्या पढ़ा उसको एक बार रिवाइज कीजिए पहले 20-30 मिनट में। सेम फॉर करंट अफेयर्स। सपोज यू आर रीडिंग करंट अफेयर्स फ्रॉम 6 to 9, तो 6 to 6:30 रिवाइज इट yesterday whatever you have studied। So this shall give you some breathing space that you will allow to revision। So revision shall be continuous thing। अगर आप 8 से 12 का जीएस का आपका प्लान है, तो डिवाइड योर टाइम इनटू 50-10। 8 to 8:50 रीडिंग, 8:50 to 9 जस्ट लुक थ्रू इट व्हाटएवर यू हैव कवर्ड टिल 50 minutes। अगेन स्टार्ट एट 9 to 9:50। अगेन 10 minutes के लिए आप देख लो क्या पढ़ा था आपने। 5 मिनट में हो जाएगा तो 5 मिनट थोड़ा रिलैक्स कर लो, लेकिन टेक अ ब्रेक
5 मिनट्स का ब्रेक ले लो आफ्टर 50 मिनट्स, 5 मिनट्स का रिवीजन, 5 मिनट्स का ब्रेक, ऐसे स्ट्रेटेजी आप रख सकते हैं। होप दिस आंसर्स योर क्वेश्चन। Yes, sir. So I have one more question. ओके। So actually, अभी in the initial phase जब हम बेसिक पढ़ते हैं, फॉर एग्जांपल पॉलिटी और स्पेक्ट्रम, तब हमको ऐसा लगता है कि नोट्स बना लिए जाएं, ऐसा मेजर मेजर, नॉट माइक्रो बट मैक्रो मैक्रो थोड़ा, बट that note making process is taking so much time, like 20 pages a day or like 30 pages a day कि notes बनाने लगो, तो it is taking like 2 or 3 hours. So is it worth कि इतना टाइम लगाया जाए notes making पे, और am I going into a wrong path? देखो, आई ऑल्सो फेस सेम। इनिशियली जब मैंने पेन पेपर लिया और लिखना चालू किया तो समय ज्यादा जाता था। व्हाट आई डिड, बिकॉज इट वाज नॉट सूटिंग मी। अगर किसी को सूट करता है कि आप पढ़ते पढ़ते पेपर में लिखते जाओ, आपका टाइम चले ना जाए इतना, तो ठीक है, कोई इशू नहीं उसमें। लेकिन अगर आप यही फेस कर रहे हो जो आप अभी बोल रहे थे, तो यू कैन सिंपली यूज ओनली पेंसिल पेन जस्ट टू अंडरलाइन द इम्पोर्टेंट पॉइंट्स इन बुक इटसेल्फ। इट वोंट टेक मच टाइम। अंडरलाइन करो जो भी आपने अंडरलाइन नोट्स पढ़े थे, किए थे, अंडरलाइन किया था कंटेंट, उसको आप रिवाइज करो। रिवाइज करने के बाद, एक दो बार रिवाइज करने के बाद क्या होगा कि आपको एक कुछ चीजें यूज टू हो जाओगे आप, कि इसका नोट लेने की जरूरत है नहीं, आपको पता चल गया है। यू वोंट नीड टू रिवाइज इट अगेन। तो उसके बाद जो भी पॉइंट्स होंगे, जो उसके बाद आपको इम्पोर्टेंट लगे, उसको अलग से कुछ करो, बॉक्स करो या फिर हाईलाइट करो। और उस बॉक्स हाइलाइट्स का फिर से रिवीजन करने के बाद कुछ पॉइंट्स ऐसे होंगे जो आपको लगेगा कि ये पॉइंट्स का नोट लेना इंपॉर्टेंट है, दिस पॉइंट्स आर इंपॉर्टेंट। तो उसके बाद आप पेन पेपर के ऊपर लिख ले सकते हो, या फिर वो जीएस एंड ऑप्शनल। आई डिडंट टेक एनी नोट्स आफ्टर फेसिंग दिस इशू इनिशियली। दे वर ऑल अंडरलाइंस, ऑल बॉक्सेस, ऑल हाइलाइट्स, एंड उसके ऊपर मैंने सिर्फ नोट्स लिए थे करंट अफेयर्स के, वो भी डिजिटली लिए थे। आई थिंक दिस आंसर्स योर क्वेश्चन। बट सर अगर बुक के अंदर जैसा आपने बोला कि अंडरलाइन के नोट्स बनाओ इस तरीके से, तो सेकंड टाइम रिवीजन या थर्ड टाइम में मुझे ऐसा लगता है कि ज्यादा गैप नहीं आता फर्स्ट रीडिंग और थर्ड रीडिंग के अंदर। बट इफ आई राइट डाउन द नोट्स और नोट्स बना लेती हूँ अलग से, तो मुझे जो टाइम लगता है वो आधा भी नहीं लगता। तो मतलब आप लिखोगे तो आधा समझ आता है क्या आपका? नहीं, लिखने के बाद अगर उनको रिवाइज करती हूँ तो मुझे आधा टाइम नहीं लगता जितना मुझे एक्चुअल लगा था रीडिंग्स के अंदर। बट अगर वो तो सेम बुक होगा। से रीडिंग करनी। वो तो होगा। अरे आपने बुक में अंडरलाइन किया ना, तो भी वही सिचुएशन होगा, आपको समय कम लगेगा उसमें भी। ओके सर, थैंक यू। किसी को है क्वेश्चंस, प्लीज रेज योर हैंड। वी आर रनिंग आउट ऑफ टाइम। Hello, sir. हेलो Hello, सिंधु। sir. हाँ, Yeah, hi, sir. My question is I'm attending mock test for prelims from last 15 days. I'm getting just average of marks in every test. I feel like even if I read for the whole life, I will never pass the cutoff marks. But still, I feel like I know this everything, but I don't know where I'm failing to reach the cutoff, and how to overcome it. That's my question. इसमें क्या है, इसमें इशू आपको एनालाइज करना है कि आपको मार्क्स क्यों कम आ रहा है, कौन से क्वेश्चंस में आपके आंसर्स गलत जा रहे हैं, वेदर यू आर गेसिंग रैंडमली विदाउट प्रॉपर गिविंग अ थॉट, आपका बेसिस गलत हो रहा है क्या, इशू क्या है, आपको खुद एनालाइज करना पड़ेगा। कौन से क्वेश्चंस गलत गए, कौन से सही आए, गलत क्यों गए। सेल्फ एनालिसिस करने के बाद फिर अगर रीजन क्या है उसके ऊपर फिर स्टेप्स लिए जा सकते हैं। ऐसे रैंडमली कुछ बताना है तो आप बेसिक्स अच्छे से करो। बेसिक्स में कुछ इशू होगा, मार्क्स कम आ रहे हैं तो उसके बाद आपके सोर्सेस ऑफ करंट अफेयर्स आल्सो इम्पोर्टेंट। आप करंट अफेयर्स अच्छे से कर रहे हो या फिर नहीं। अगर मार्क्स कम है तो देर आर इश्यूज इन दैट आल्सो। देन नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स, it also matters. If you are getting too less score with 90 plus attempts, try to attempt 70 to 75 questions. Look at your marks then by reducing your guesses. So all these things you can follow. Thank you, sir.
Thank you so much, Hello, Soham sir. sir. Hello. Yes. So yeah, I would like to intervene here. Thank you, Soham. I think बहुत बच्चों की यहाँ पे मैं चैट पढ़ रहा था, बहुत बच्चों की क्वेरी या एक रिक्वेस्ट आ रही है कि मेंटरशिप प्रोग्राम की फीस या उसमें क्या क्या आप हम सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं. तो आई वुड लाइक टू क्विकली लिस्ट इट आउट. ठीक है, देखो मेंटरशिप में वो सब कुछ मिलता है जिससे आप एग्जाम को क्वालिफाई कर सको. देयर आर 5 रिविजन्स जिसकी हम गारंटी लेते हैं कि हमारी मेंटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि 5 रिविजन्स आपकी हो जाए इन कमिंग 9.5 मंथ्स में प्रीलिम्स तक, उसके बाद 3 मंथ्स में मेंस, राइट. सो इसमें हमारा एवरीथिंग इज देयर इंक्लूडिंग टेस्ट सीरीज प्लस इवैल्यूएशन प्लस वन-ऑन-वन असेसमेंट एंड जूम कॉल्स एंड वन-ऑन-वन कॉल्स विद सुपर मेंटोर इंक्लूडिंग सोहम सर. ओके, सो हमारा वीकली टारगेट होता है, we do provide report card to everyone who are joining this course and weekly assessment plus weekly current affair test of Samachar Manthan, and that will be discussed one-on-one on a week basis. Okay, you will have a chance to meet and talk to Soham sir once in a month, direct call. ठीक है, prelims test series include 60 plus tests, mains test series include 36 tests including FLT, and CSAT there will be around 12 tests. ठीक है, and prelims crash course will be there, which includes in super mentorship program that is of Zishan sir. He has qualified 6 forest exams, not only civils but forest. He is heading the prelims team, so he'll take care of your prelims, and that is a crash course of 4 long months including super mentorship. Other than this essay program including 14 tests, Samachar Manthan is there, which is weekly current affair program which include video support plus magazine plus test and a model answer. Okay, so this is a package of total mentorship which will be there till mains 2024, that is till September 24, and the fees would be, the actual fees is 76,700 including GST. but आज आप लोग सोहम सर के साथ जुड़े हैं, हमारे साथ जुड़े हैं, तो we are providing it on 60,000 rupees only including GST. Thank you so much guys. Soham, please continue. क्या है किसी को issues? Yes, sir. Rashmi here. Sir, I would like to ask about the current affairs. Like, what was your approach for the current affairs? Like, did you make the notes out of newspaper, and which newspaper to refer? So, can you please guide? Very pertinent question, because current affairs is there in prelims, it is there in mains, it is there in interview. So current affairs, I think we had a session on current affairs 1. Current affairs, you need to select proper sources, you need to take proper notes, you need to refine your notes, and you need to use whatever you have taken as a notes in your actual examination to make it worthy of your efforts. So sources can be one newspaper, then Express or the Hindu, and one magazine. Magazine to just make sure that something from other newspaper which was important but not present in the newspaper which आप पढ़ रहे हो, जो भी उसमें अगर वो ना हो तो मैगजीन में आ जाता है. तो आपको एक न्यूज़पेपर एक मैगजीन पढ़ना है, तो न्यूज़पेपर में भी पढ़ते वक्त जस्ट जो दिखाया गया है, जो लिखा गया है, उसको फिर पढ़ना नहीं है. उसमें आपको प्रोसेस करनी है न्यूज़. Why this happened, what steps can be taken, then how it is linked to different aspect of your country, etc. You need to think upon all these factors while reading the news and take notes accordingly. And sir, one more thing, that should we make notes from these newspapers on day-to-day basis or subject to subject basis? Try to make it from day-to-day basis, but ensure that you read the magazines for that particular month. If you miss newspaper of any particular day, do not much worry about that. You can simply then go through headlines and after mark some dates. Suppose you miss the reading the newspaper on 12th August, save a newspaper copy, and after reading the magazine, just go through headlines of that newspaper. If you feel that some article is important and not covered in the magazine, then you can simply go through those articles. Do not worry about missing the newspaper, but try to do it daily. Because a newspaper will build your perspective of a bureaucrat. There will be different types of analyses in editorials or explain sections. News, you will get ample of examples to illustrate your
answer more appropriately. So newspaper is very much important. You shall be referring at least one newspaper. How to make Thank you, sir. The question was about how to make notes. The note making will happen, or note making will be more productive if you know what is the actual demand of the UPSC. For that, you need to be in touch with UPSC's previous year questions continuously. You need to remember your syllabus of UPSC. After remembering all this stuff, all these previous year questions, you are able to manage. You will build a perspective on your own. And these are things important that UPSC will ask. And as soon as you read the news, you will think that this content is important, this is not important. UPSC won't touch it. UPSC will focus on it. And the content which you feel that UPSC will ask on it, you have to take note of that. Particularly data, keywords, the important aspect, developments, quotes, what Prime Minister said, what External Affairs Minister said, what different personalities said, some fancy words, some projections, all those things, trends, etc. You have to take note of. Thank you so much, sir, for answering the queries of Good evening, students. sir. So, Sir, how to overcome negative thinking? After my two failed serious attempts, my parents visited some astrologer and he said that there is no chance of getting you in a government job in your horoscope. How to overcome all this negativity around us, sir? It comes with proper planning. Satisfaction, you have to find satisfaction in small things. You can prove your horoscope wrong by taking some much needed steps, such as negativity will go once your efforts started to produce some result for you. It can be in mock test, it can be in actual examination. So get result, you have to focus on everything. Your mental peace that will come with meditation, then practices such as Kapalabhati, then Brasrika is there, Brahmari Pranayama is there. All those things will help you to make your mind strong, to bring you peace to your mind. So after that, you have to plan it properly. You have to give adequate time to everything and ignore other things that you won't pass it or like that. I will share my personal example. There was my friend, very close friend. Then after some time, there was strain in our friendship. So he used to say to other friends that I will not, never qualify this examination, never, because I lack those qualities and all that stuff. So he was right to some extent, because I was not having those qualities that. But finally, I was able to get rank twice. I appeared in 3 interviews of UPSC. Yes. So I proved him wrong. The friend, which was very close to me, he doubted my abilities. I also doubted myself a lot. During my failure in first mains, I doubted myself. I got interview call in second attempt. I missed the rank by 12 marks. I doubted myself again. But while doubting, I followed all those things which I discussed with you. You have to be positive. It will help you. And it is not a small topic. It is a very big topic to discuss. I think 5 minutes, giving 5 minutes to it is not worthy. So there is a Telegram channel with ID Soham267, my last year rank. Soham267. You can join that and you can message me there. We will discuss it if you face any issues again. Yes, sir. Yes, sir. Thank you so much, sir. Thank you so much. Good evening, sir. So my question is, how many months current affairs to be covered? How many months current affairs will be covered? Yes, sir. There is no objective deadline. I was able to clear the prelims once with 8 months current affairs. Then I usually refer 12 months of current affairs. Suppose the prelims is in May 2023. Then I will cover current affairs from June 2022 to April.
So similar goes for mains also. If mains is happening in September, then the current affairs of September onwards are important. August, September onwards are important. So 12 months is something or deadline that you shall be focusing on. सर एक्चुअली मैं जैसे अपना फुल फोकस अटेम्प्ट यूपीएससी को देना चाहता हूँ, बट ऑन द अदर साइड जैसे स्टेट पीसीएस के वैकेंसीज है वो निकलती हैं एंड जो अदर वैकेंसीज निकलती हैं स्टेट में, तो सर वो चीजें जो है वो एक माइंड में डिस्ट्रैक्शन आ जाती है. तो सर इज इट अ राइट थिंग कि स्टेट पीसीएस का अटेम्प्ट देना चाहिए? आपका कौन सा अटेम्प्ट है? आपका कौन सा अटेम्प्ट सर है? मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट है, बट एक्चुअली सर कहीं ना कहीं ये डिस्ट्रैक्शंस और ये जो फैमिली प्रेशर्स हैं ये सर कहीं ना कहीं थोड़ा सा परेशान कर देते हैं. कौन सा स्टेट है आपका? राजस्थान से. ओके, आई थिंक राजस्थान का आप स्टेट पीसीएस का एग्जाम दोगे तो उसका रिजल्ट आने में 2-3 साल जाते हैं ना, कम से कम. यस सर. 4-5 साल चले जाते हैं, रिजल्ट आते नहीं टाइम पे ना. यस सर. हाँ, तो फिर आप यूपीएससी में 2 अटेम्प्ट दे दो, फुल फोकस ऑन यूपीएससी ओनली. अगर आपके इम्प्रूवमेंट्स ना हो, सच एज सपोज यू pass the prelims in first attempt and not able to get into, call in second attempt, first attempt, and second attempt also same happened, then you can shift toward state PCS also, but focus on UPSC for 2 years. I think then you can think about this. ओके सर. एंड सर इनमें जो बाकी जैसे अदर जो डिस्ट्रैक्शंस आती हैं अदर वैकेंसीज की, सर उनसे सर कैसे मैनेज किया जाए? आप उसमें एनरोल करो. आप उसमें एनरोल करो, आप उसको टाइम मत दो, यूपीएससी पे फोकस करो, जस्ट एग्जाम दे के आ जाओ, हो गया तो हो गया. So I hope everybody has registered themselves in the link that I have provided them. If you want to avail the scholarship, otherwise you know that the fees is going to be 80,000 approx. So we are giving you 1 or 2 minutes if you want to register yourself and if you have missed. And at the end, I want to thank Soham sir a lot for this insightful session. I am pretty much sure that every student had a lot of insights from you basically, and hope to see you again in the sessions for basically the super mentorship only. Thank you everyone for your valuable time, but I'm not satisfied yet, as guiding students is something that shall be satisfactory. Everything shall be covered, but we have limited time. I have to stop at somewhere. Looking forward to another sessions. Thank you. हाँ, ये तो स्टार्ट है. अब धीरे धीरे बच्चे जो है आएंगे तो हम इनको प्रॉपरली सेल थ्रू करेंगे. डोंट वरी. So students who wants to join the session, they can connect us again. We have dropped the form. Also, you can connect us after the session. You can mail us or you can connect directly from the Civilsdaily number. Thank you so much for joining, everybody. Thank you. Thank you. Thank you, Praveen sir. Thank you. Thank you, Muskan.